Hello, everyone. Hello to all of you, and a very good evening. Welcome to this session, another mock test for all of you. So, I just want you people to tell me, first of all, if I'm properly audible and visible or not. All good? Kindly give me a confirmation ताकि हम शुरू कर सके. For those who don't know me, I am Niharika John Mehra. That's my name. And I have been teaching English for more than 10 years now, competitive exams के लिए. तो आपको बहुत सारे helpful मेरे sessions मिलेंगे. I do have classes on our platform that is under paid course, and then we have classes here जहाँ पर as of now we are working through the questions जो RBI grade B prelims के लिए है. Today, in this mock test, what we are going to do, if you are new to this whole thing of mock test, we are going to do a set of questions back to back and then I'll explain. आपको questions timer के साथ करने हैं. So I'll take another minute. I'll wait for more students to join. आप लोग भी quickly share कर दो, like कर दो वीडियो को and subscribe to our channel. If you are new here, यहाँ आपको regular sessions मिलते हैं रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए. तो जल्दी जल्दी आप भी ये सब कर दें एंड लेट्स बिगिन इन अ मिनट. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू पीपल टू कंफर्म इफ यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपरली एंड सी मी प्रॉपरली. आई थिंक आपके मैसेजेस मुझे लेट आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं. आई कैन सी सम ऑफ यू हैव जॉइंड. आप में से कोई भी मुझे कंफर्मेशन दे दो कि वीडियो ऑडियो ठीक है. ओके. It would have been great कि कोई मुझे बता पाता, but it's okay, let's begin. So if you're watching the recording, आपको जो टाइम दिया जाता है यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस जो है उतने टाइम में करने हैं. And there we go. Thank you so much, Shreya. This is the first question. Now we will just continue doing the questions of set 1. Thank you guys for confirm. आप लोग क्वेश्चन करना शुरू कर. Thank you. Thank you so much, Rashi.
You remind me of one of my students, my very dear students, Kanchi. So thanks. Thank you. तो late join करें हैं. We are going to do a couple of questions in one go. This is set one. Then I'll explain and then further on. We will discuss the questions shortly. अभी आप continue करो. Thank you. It's okay. You guys can continue doing the questions and मैं फिर लास्ट में सब लोगों को एक साथ थैंक यू एक और बार बोल.
the last question of the set. इसके बाद में we will discuss the questions and उसके बाद फिर हम next set of questions. Once again, thank you so much for your lovely wishes. And now let's have all our mind towards the question. Attention, आपको question को देना है. I am gonna explain. Explanation के समय whatever I am telling you, it's like a revision for you all. तो please ध्यान से सुनते जाना. Even though आपका आंसर सही हुआ है, फिर भी सुनो. Revision. The financial markets may be hampered by a lack of information. तो द टोन इज पैसिव बिकॉज ये हैम्पर का काम मार्केट्स के ऊपर हो रहा है. तो कुड बीन हैम्पर्ड, कुड के बाद सीधे बीन लग ही नहीं सकता, अपने आप में एक गलत है. माइट हैम्पर्ड अपने आप में गलत है. आफ्टर माइट और एनी मॉडल वर्ब यू वांट वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, या फिर बी लगाकर फिर आप बोलोगे थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर तो सी और बी अपने आप में गलत है. मस्ट हैम्पर एक्टिव टोन नहीं है. मार्केट्स हैम्पर नहीं कर रहे, मार्केट्स खुद हैम्पर हो रहे हैं. सो नो इम्प्रूवमेंट. दिस वाज वेरी वेरी इजी. एज टू पॉलिटिक्स पॉलिसीज टू करेक्ट मार्केट फेलियर्स आर इम्पॉर्टेंट. नाउ आगे का सेंटेंस है मोस्ट इफेक्टिव रैशनल इज ग्रोथ. आप बोल रहे हो पॉलिसीज आर इम्पॉर्टेंट. इन सेकेंड हाफ वी आर सेइंग इफेक्टिव रैशनल इज growth. So what exactly is important, right? So these are the two things here. Contrast में है एक दूसरे के. तो हम although लगा सकते हैं, as though नहीं लगाएंगे. as per means हम किसी source को quote कर रहे हैं, and even if भी contrast को बताता है कि even if policies are important, rational जो है वो तो growth है. Most important rational, effective rational. तो A and D के answers थे. The government impose the policies on agriculture. Government singular है तो imposes आएगा, and impose policies अगर हो रही हैं तो किस पर हो रही हैं. So we always use on to talk about any rule, any policy being imposed and working on something or someone. तो यहाँ पे बहुत easy था, only B. No, not always. Although is a sharp contrast, even if has a slight condition attached to it. But आप उसको contrast के लिए use कर सकते हो. Private investors may be unable. पक्के से गलत है. These investors have begun unable. Meaning नहीं निकलेगा. May be unable. तो कभी भी कोई modal verb होता है या फिर modal verb के साथ में आपको be मिल रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कई बार नहीं मिलता है. यू डू गेट एडजेक्टिव. ही मे बी हैप्पी, शी शुड बी सैड आफ्टर हियरिंग दिस. ऐसे करके बी और सी यहाँ पर आ सकते हैं. एंड अनेबल, एबल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो ये डी वाला तो अपने आप में गलत है. वेरी इजी. इफ द मार्जिनल बेनिफिट एक्सीड्स द मार्जिनल कॉस्ट, then people will being अपने आप में गलत. will के बाद being. will be willing to pay. yes. would be willing to pay. would be बोल सकती हूँ मैं. there is a chance they might not feel but they may feel. तो यहाँ पे A और B दोनों लग सकता था. it was an easy one. कोई भी डाउट बीच में आता है you can ask. now हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस देखते हैं. तो द फर्स्ट लाइक इन द रिवर्स ऑर्डर फिफ्थ वन था ये. यहाँ आपको लगाना है unsecured. okay, this is the question. unsecure है. so RISIL expects unsecured lending. what kind of lending? lending we are using as a gerund. gerund और noun को explain करना. to modify a gerund or a noun we use adjectives. so unsecured आना था with a D. to grow at a similar fast trajectory. see, trajectory is fast and at the same similar also. So I can use two adjectives for this noun trajectory. over the next 3 years. 3 है तो plural आया. driven by attractive loan yields. driven by loan yields. significant segments. which segment? customer segment and the untapped one. and technological facilitation. every other thing falls right into its place. Thank you so much, Harsha.
Thank you. Paucity of capital and high levels of stressed assets. There are two things. Paucity and levels. अभी paucity किसकी है, levels किसके हैं? Now I know for sure my subject is plural. Constrain is the verb here. Subject verb agreement perfect. The ability of PSBs to lend, and this would continue to impact their growth. तो इम्पैक्ट के साथ ऑन कुछ केसेस में यूज होता है, बट यहाँ पे एज अ वर्ब बोल रहे हैं हम. एज अ वर्ब it impacted his success. Something happened which impacted his decision making. तो impact as a verb सीधे सीधे किसको impact करा, क्या impact हुआ उसको बताते हैं. Now when you use this word impact as a noun, then you use on. Impact on students. Niharika's impact on students. So वैसे आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, नाउन जैसे यूज कर रहे हो, तब आप ऑन लगा सकते हो. यहाँ पे आपको ऑन को हटाना पड़ेगा. देयर इज अ वेरी थिन लाइन क्रॉसिंग ऑन. आई डोंट नो आप देख सकते हो कि नहीं, बट लेट मी जस्ट क्रॉस इट दिस वे. तो ऑन नहीं आना था, ये एरर था यहाँ पर. ओके, मूविंग अहेड. This one was no error. With funds drying up. So this is the context. Whenever your sentence starts with a preposition, वो आपको एक इंट्रोडक्शन देता है. वहां पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एकदम से नहीं मिलेगा. So with something happening, he decided what it was time. Time to do what? Venture out. टू के साथ वेंचर है तो एंड के बाद स्टार्ट आया. स्टार्ट समथिंग दैट वुडंट बी हिट बाय व्हाट? बाय मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस. बिकॉज हम लाइक बोल रहे हैं, नाउन प्लूरल होना चाहिए, सिचुएशंस प्लूरल है. लाइक द फाइनेंशियल सेक्टर. नो एरर एट ऑल. ओके, टिल इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन चैट में बता दो. With 30 students and a fee of 8 lakh for 2 years. So again आपको यहाँ पे with, which is a preposition, is giving us an introduction. यहाँ तक लखम राजू reckons, एक ही नाम है तो reckons that the program was successful. Adjective कैसे? Highly. Adverb and adjective. And claims, reckons and claims. Okay, so यहाँ पे parallelism maintain है. The person is reckoning, the person is claiming. Many of its students, plural है, many, have climbed to the ranks of country heads. See guys, many students, तो and ranks are there. तो country एक head नहीं है country head का. It is not a country head. That's why यहाँ पे plural आना था, of country heads of their respective organization. आगे और clarity है. ये जो हेड्स हैं, ये जो सीनियर पोजीशन है, वो एक नहीं है, रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस है, रैंक्स है. तो यहाँ पर भी प्लूरल आना था, विच वाज द एरर. यहाँ पे जो सिंगुलर दिया हुआ था. थैंक यू सो मच. दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू. थैंक यू, अनीता. Anita ma'am, I should say. I don't know how old your daughter is, but yeah. Asia's third largest economy singular, is expected to have over so many smartphone users. Guys, ध्यान देना यहाँ पे. ऐसा क्वेश्चन जब ब्रेक होता है ना, तो इमीडिएटली थॉट आता है कि 530 है मिलियन, ऑफ कोर्स, बट मोर देन वन है तो स्मार्टफोन्स होना था. बट हम स्मार्टफोन्स की बात नहीं कर रहे, हम यूजर्स की बात कर रहे हैं, जो प्लूरल है. स्मार्टफोन यूजर्स, इट्स अ कंपाउंड नाउन. 530 मिलियन, ऑफ कोर्स मोर देन वन है तो हमने प्लूरल यूज करा है. अ नंबर दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू, बिकॉज हम एक लिमिट बता रहे हैं, एक अपर लिमिट को बताया जा रहा है. सो टू गो अप टू आएगा. यहाँ पे क्वेश्चन में अप मिसिंग था, तो आपको अप ऐड करना पड़ेगा टू गिव इट द राइट स्ट्रक्चर. एंड डी यहाँ पे आंसर था. ओके, तो आई होप यार ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए, कंसेप्ट रिवाइज हो गए. जल्दी बताओ मुझे कमेंट में. Then we will continue doing the questions further. लाइक और शेयर कर दें वो सभी जो बाद में आप आए हो यहाँ पे. We are gonna start next round of questions.
Ready? This is a closed test. Paragraph में जो blanks होते हैं. Please start doing. Follow the method which I have taught you. Give it a rough reading and then you start filling the respective blank. Now these are fillers, double filler, double fill in the blank. आपको वो करने हैं.
This is a Parajumble question. Once again, quickly let me explain. Few sentences are fixed for you, two of them, third and the sixth one. आपको बाकी के arrange करने हैं. It should be coherent and आपको यहाँ पे सोच समझ के पूरा arrangement करना है. कितने बजे तक? 9:30. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल सेट, पर इसको समय लगेगा करने के लिए 3 to 4 minutes. Paragimbal's one of those topics that can only be handled through practice. I have already shared strategy many times. I'll do that again while I explain this question. But ultimately, you have to practice as many questions as you can. Enough time given. The answer here is TQ, third one, PR, sixth one, and S at the end. So I'll now explain all the answers and you should listen to the explanation very carefully. Happy to see good correct answers here. So let's see कैसे करते हैं. There are two primary methods. Inverted triangle, where आप एक broad explanation पहले देते हो, you narrow it down, and then you make some pairs and then place those pairs with other pairs rather than आप एक एक करके arrange करो.
So वो दो methods होते हैं. So and then the main strategy, the main thing is that you start reading and keeping some hints in your mind. SPOs whose main role is all these are soft targets because they do not live. Now SPO का full form क्या है? अभी तक तो नहीं समझ में आया यहाँ पे कुछ भी. There is no full form yet mentioned. So definitely P first नहीं हो सकता. The advisory. So advisory का कुछ introduction होना चाहिए. Then only I can say the along with a common noun, in this case advisory, comes in the wake of killings of 3 SPOs on Friday. तो कुछ हुआ होगा. After that an advisory came up. So वो समझते का. The killings, यहाँ पे the killings third fixed है, were in part responsible for India reconsidering its decision to agree to the meeting of foreign ministers in fortified. Now R जो है that is half of a sentence जो कि later half है. This will make your work easier, trust me. तो आप देखोगे यहाँ पे अगर P देखोगे because they do not live where, एक अधूरापन है यहाँ पे. तो P और R पक्के पेयर थे. Since P cannot come in the beginning and third fixed है, sixth fixed है, तो PR के लिए तो और कोई जगह बची ही नहीं. PR has to come at this position between third and the sixth one. तो वो fourth fifth अपने आप बन जाता है ऑटोमेटिकली. और आंसर यहाँ पे इतना तो बन ही गया. 2 other policemen in the same villages escaped. Now ये जो S sentence it is about 2 other people. तो S को लास्ट में रखेंगे बिकॉज बाकी जगह तो फिलअप हो चुकी हैं. T और Q साथ में आएगा बिकॉज T में we are getting full form of SPO, that is special police officers. And we get to see कि administration is telling which is this not to visit their families and homes. This is an advice, an advisory. तो वो T और Q पेयर है. T is opening सेंटेंस लेटिंग अस नो कि इवेंट हुआ क्या, बात हुई क्या. तो T के साथ Q ऑटोमेटिकली सेकंड आ गया. थर्ड फिक्स्ड है, फिर सेकंड पेयर हमने लगाया PR. सिक्स फिक्स्ड है, S के लिए जगह नहीं बची, आखिरी में आएगा. सो इजी. इन एग्जाम ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेइंग कि आपको फिक्स्ड मिलेगा. इन एग्जाम यू कैन गेट जस्ट 5 sentences, 5 questions on 5 sentences, a parajumble, but the approach will remain the same. Hints देखो, connectors देखो, pronouns देखो, the with a common noun देखो, full form short form देखो. These things keep in mind and make sure you have at least one pair out of the whole story. Then you start thinking, okay, individual sentence नहीं, as a pair जो बात बोली गई है, as a pair whatever is being spoken, वो हम कहाँ लगा सकते हैं, वो किस इवेंट, किस आइडिया के बाद में या पहले आएगी. आई होप यू आर गेटिंग. नाउ वी विल गो बैकवर्ड्स अगेन एंड वी विल डू दीज क्वेश्चंस जहाँ पर वोकैबुलरी थी. So this is now your vocabulary revision. Some other words which I feel should be revised, हम वो उसके मीनिंग भी मैं आपको बताती जाऊंगी along with of course जो यहाँ पे सही आंसर है. ओके, PR कैसे हुआ? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. P में यहाँ पे है do not because they do not live, but these are the policemen, ये तो जीवन तो जीते हैं. So this is something incomplete. R says in camps like whatever. Now R अपने आप में complete sentence नहीं है. It is not a complete sentence on its own. This is the extension part of some other sentence, which in this case is P. Dependent on the pre and post ones. These which sentence? These sentences. So you are talking about something specific. Please explain your doubt, Anand. Let me get back to this one by that time. So there is an erroneous perception. Erroneous means something having error. That high-profile players make good managers. So यहाँ पे दो words हैं. Perception wrong है, error वाला है. क्या perception है कि players जो हैं high profile हैं तो अच्छे managers हैं. Okay? Let's come to the other words. Fervent है अगर कुछ, तो it's very passionate. Fervent is an adjective. Fictitious है, it is false. गलत है, गलत नहीं बोलेंगे, झूठा है. Okay?
ardent is also passionate. ardent और fervent एक दूसरे के synonyms है. Anything which is evasive, okay, evasive is जिसमें बहुत how to it's something जो बहुत vague है, okay, काफी clear cut नहीं है. Second meaning evasive का होता है as an adjective where we are sidestepping something or someone. तो यहाँ पे वो भी नहीं आ सकता था. बाकी कोई वर्ड, वॉर्म, इमेजिनरी, ये सब तो इजी वर्ड्स हैं. ओके, फेसाइल, फेसाइल देख सकते हैं हम. एनीथिंग विच इज सुपर डुपर सिंपल, बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि देखते से ही समझ में आ गया, उसमें कुछ भी समझने ज़्यादा सोचने लायक नहीं है. दैट्स देयर. द फॉर ऑल दी सेंटेंसेस आर डिपेंडेंट ऑन प्री एंड पोस्ट वंस. नो, नॉट लाइक दैट. सी, स्टोरी आगे बढ़ती है ना. सो व्हेन वी डू अ पैराजम्बल क्वेश्चन, एक इवेंट है मान लो, दैट हैपेंड. After that, some decision was taken. After that, it impacted some, let's say, some people in some other way. So build up hota hai. You may get a new fact that is after 2-3 lines, but that fact will be extended form of what was happening earlier, or because of what happened earlier. So it could be any type of connection. I cannot say that. Let's say जो हमारा आंसर था यहाँ पे, Q is dependent on T, T is dependent on Q, P is dependent on third one, and the same goes for R. ऐसा नहीं, interconnected है पर interdependent सब कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं है. जैसे S sentence है, to other policemen, it is a new information, but to other policemen मतलब कि पहले वाले policemen की बात खत्म कर दी होगी हमने बोलना. Then we are talking about a new set of people जो कि यहाँ पे S में था. I hope I have answered you, Anand. Okay. The pharmacy deleted an important ingredient in your blood pressure management when it made this switch. Okay. See, pharmacy increased an था तो doubtful और dubious दोनों synonyms हैं, आ ही नहीं सकते थे. Chastise करना किसी को डांटना होता है. Evasive का meaning अभी मैंने आपको बताया. तो pharmacy enhanced an evasive ingredient जो कि काफी indefinite है, नहीं बोल सकते. Pharmacy improved an enormous ingredient, वो भी बोलना मीनिंग नहीं निकलेगा. आप ग्रामेटिकली दोनों वर्ड्स लगा सकते हो यहाँ पे, बट मीनिंग निकलना चाहिए सेंटेंस में आफ्टर यू एड दोज वर्ड्स. वो नहीं निकल रहा है ना. चलो आगे चलते हैं हम. My head rang with pain, but I was alive, and the thought made me want to jump in joy. Alive है ना, तो इंसान क्या करेगा? Thought that I'm alive, it made me to jump in joy. Jump in catastrophe, कुछ बहुत बड़ा बुरा हुआ है. calamity, destruction and demolition. Demolition is a very specific word जो कि कुछ constructed है और उसको गिराया जा रहा है, तब हम यूज करते हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे और कहीं पर भी ये कॉन्टेक्स्ट में आप वर्ड का यूज नहीं कर सकते थे, है ना. Yes, Anand. I'm very sure if you keep working on the topic, you will get through. Deference. This word B पहला वाला difference नहीं है, deference है. Deference is a noun that means किसी को हम regard देते, consider करते हैं, उसको आदर सम्मान करते हैं. Okay? So, student showed deference to the teacher on the occasion of Teachers' Day. And they do that usually also. Let's say like that. तो डेफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट होता है, जो सी में वर्ड है वो सी का सिनोनिम है. किसी का डाउनफॉल मतलब किसी का तबाह हो जाना इन हिंदी. इन इंग्लिश इट मीन्स दैट समथिंग और समवन इज रूइंड. टिपिकल इसी का सिनोनिम है. ओके, डी एंड ई के फर्स्ट वर्ड आपस में सिनोनिमस है. थ्रू डोमेस्टिक आइटम्स, some kind of ceremonies and histories, we can dash direct relations. We can enlighten when something which was a secret, which was not known, now is known, उसमें enlighten आता है. Violate, direct, violate is to cross something,
वायलेट इज टू क्रॉस द लाइन इन सम रिस्पेक्ट, तो हम वो बोलेंगे नहीं ना सेकेंड वाले को अगर हम ध्यान से देखें। तो यहाँ पे वायलेट या एनलाइटन से कोई भी मीनिंग नहीं मिल रहा है। एनग्रॉस इज समथिंग विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी फैसिनेट कर लेने वाला है। एनग्रॉस का मतलब एक प्रकार का टाइपिंग भी होता है, तो वो भी नहीं बोल सकते। वी कैन एक्सप्लेन रिलेशंस, एक्सप्लेन हो सकता है, सेकंड में सी भी हो सकता है। ओके, थ्रू डोमेस्टिक आइटम्स, शाय सेरेमनीज, कौन सी टाइप की सेरेमनीज होती है जो कि काफ़ी शाय होती हैं? दैट मेक्स नो सेंस। टिमिड भी यहाँ पे मीनिंग नहीं बनाता। टिमिड इज लैकिंग करेज टू से समथिंग, टू डू समथिंग, है ना। डिम्योर एंड पायस भी यहाँ पे नहीं आएगा, ऑफकोर्स सेकेंड वर्ड इनके तो हट ही गए हैं। पायस इज समथिंग और समवन जो कि काफ़ी गॉड फियरिंग व्यक्ति होता है, वो काफ़ी डिवोटेड होता है, वो गलत काम कर नहीं करेगा, दैट काइंड ऑफ डिवोशन। डिम्योर इज शाय बट इन अ वे जहाँ पे वो थोड़ा क्वाइट है, जरूरी नहीं कि उसको डर लग रहा है इसलिए, बट दैट्स हाउ द पर्सन इज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लकी। In fact, it feels good to see so many students are here wishing you. Now, junior girls put up a brave fight before losing by a point to Yorkshire at California in a football match. My God, this was so easy. हाँ, इसके बाकी वर्ड्स काफ़ी अच्छे सीखने के लिए, बट फुटबॉल का मैच ही होगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। कैशे और कैश दोनों बोला जाता है इसे। दैट मीन्स हम किसी चीज़ को स्टॉकपाइल कर रहे हैं, किसी चीज़ के सप्लाई को इकट्ठा करते जा रहे हैं, कलेक्ट करते जा रहे हैं। Then we have the word that is a deterrent. Anything that is a deterrent is something जो किसी चीज़ का obstacle है, hindrance है। Scarcity और sympathy easy words हैं, devoid easy word है, नहीं पता हो तो पूछ लेना। Contraband. Contraband is a negative word that means black marketing करने वालों के लिए बोला जाता है। कॉन्ट्राबैंड वो चीज़ें हो जाती हैं जो कि जिसको ब्लैक मार्केट में डाला जा रहा है या स्मगल करा जा रहा है। नाउ वी हैव क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को मैं फर्स्ट वाले से लूंगी बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ अ क्लोज टेस्ट इज दैट you fill the words not only as per the blank and the statement in which the blank is, but with respect to the whole passage. So we'll start from here. Among the array of bold promises, the promise of loan waiver ranks foremost. Foremost मतलब सबसे पहला, forefront मतलब सबसे आगे, foresee मतलब फ्यूचर को देख पाना या फिर समझ पाना, गैस कर पाना। foretell is same, foreground is सामने वाला हिस्सा, फोर इज सामने वाला, पहला वाला। तो यहाँ पे हम रैंकिंग्स की बात कर रहे हैं, दैट वाई फोर मोस्ट आएगा, रैंक्स में सबसे पहले। Ever since farmers took to the streets in June last year seeking attention. Attention जब हम चाहते हैं किसी से तो we seek attention. Okay, this is how do we say, it's a collocation that we use. Okay, कि पे अटेंशन होता है अटेंशन देने के लिए, और चाहने के लिए सीक अटेंशन होता है। सीध करना इज समथिंग जहाँ पे बहुत गुस्सा जो है वो धीरे धीरे बनता जा रहा है, फोम होते जा रहा है। ओके, तो उसके लिए हम सीदिंग बोलते हैं। प्लेकेट इज अ पॉजिटिव वर्ड दैट इज टू काम डाउन समथिंग, स्पेशली एक नेगेटिव, एक इंटेंसिटी भरी सिचुएशन। इम्प्लीकेट करना इज यू आर समवेयर कनेक्टिंग सम डॉट्स, इन्वॉल्व कर रहे हो किसी को, किसी पॉइंट को, तो वहाँ पे आप इम्प्लीकेटिंग का यूज़ करते हो। लैंग्वेज करना इज किसी चीज़ को या कोई चीज़ अपने आप धीरे धीरे खराब होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही, ग्रोथ रुक चुकी है। फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट से याद रखो, ऑफ कोर्स इट इज फर्स्ट,
तो वो इम्पोर्टेंट बाय डिफॉल्ट है ना, पर उसका मीनिंग वो अकेला नहीं होगा ना. For farmer movements, rising corporate assets and haircuts offered by banks provided added ammunition. है ना, क्योंकि ये सब हुआ पास्ट में. सो राइजिंग असेट्स एंड हेयरकट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स ने क्या करा, प्रोसेस प्रोडक्शन प्लेस्ड एडेड अम्यूनिशन. मीनिंग नहीं निकलेगा, प्रैक्टिस करना मीनिंग नहीं निकलेगा. देखो वर्ब के 3 ऑप्शन थे सी डी ई, उसमें से मीनिंगफुल सिर्फ सी है, बाकी ए और बी नाउन है. सबके मीनिंग काफ़ी ईजी है, सो आई एम नॉट गोना टेक दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड जो कि सी में हमें दिया गया है ना. Coming to D. Now, it says, sensing the mood, opposition promised dash farm loan waivers. Waivers काफी अच्छे खासे तगड़े थे, generous थे. ओके, जर्मेन का मतलब होता है समथिंग जो कि अप्रोप्रिएट है, जितना होना चाहिए उतना है. जेनेरिक और जनरल एक ही मीनिंग होते हैं, और कोई चीज़ खराब होती है तो वो डीजेनरेट होती है. डीजेनरेट एज एन एडजेक्टिव का मतलब होता है खराब, करप्ट हो गई. तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं सेंसिंग द मूड, ऑपोजिशन ने और अच्छे खासे वेवर्स, अच्छे दिल खोल के वेवर्स को ऑफर करा, तो वेवर्स जेनरस थे. नॉट एग्जैक्टली, सीदिंग ऐसा नहीं है. सीदिंग का मतलब देखो, हम हिंदी में बोलते हैं गुस्सा जो है, गुस्से से आग बबूला हो गया, वो गुस्सा अंदर ही अंदर फूट रहा है, दैट इज सीदिंग. Before these elections, the ruling party took a principled stand by saying, based on principle is principled. Precaution, देखो stand is a noun, ग्रामर से करो इसको. नाउन को समझाने के लिए वी नीड एन एडजेक्टिव. शन वाले वर्ड्स कभी एडजेक्टिव नहीं होते. प्रिंसिपल पिनिकल नाउन है. प्रेवलेंट जो चीज़ कभी काफ़ी समय से बनी हुई है, तो यहाँ तो चेंज हो रही है ना, बिफोर दीज इलेक्शंस. तो प्रिविलेंट मतलब जो मार्केट में जो सब जगह चल रहा है वैसा ही वाला स्टैंड उन्होंने लिया. इफ आई से दिस विल गिव यू नो मीनिंग एट ऑल. तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड को वर्ब फैमिली में से उठाकर वर्ब थर्ड फॉर्म वी आर यूजिंग इट एज एन एडजेक्टिव. स्टैंड दैट हैज सम काइंड ऑफ बेस, सम काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो कि मॉरल्स के ऊपर बेस्ड है, उसको हम प्रिंसिपल स्टैंड बोल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे बी. ओके, एनीवन हु गॉट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट? ये आपके क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन था. Anyone? I think we did 25 questions. So anyone who got 23 or 24 correct at least. अगर आप बीच में ज्वाइन हुए हो, सो ऑफ कोर्स आपने कुछ क्वेश्चंस मिस करे, देन कांट हेल्प आउट. बट अभी के केस में that's okay, don't be sorry for that. That's completely fine. I'm here, your teacher, to explain, and you as a student of course will have doubts, and in fact that shows that you are paying attention, you are trying to understand something, so that's completely fine. ठीक है, so do check out our other courses also. डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक हमारे प्लेटफॉर्म की, एंड आई डू हैव क्लासेस हियर, ऑन एंड ऑफ होती हैं, बट येस ऑन यूट्यूब आई डू टेक डिस्क्रिप्टिव क्लासेस एज वेल, वेयर आई चेक द essays written in live class. So एक टाइम कंस्ट्रेंट में, प्रेशर में कैसे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, अ पीस ऑफ राइटिंग उस समय, तो वो मैं चेक करती हूँ. आई वुड लव टू सी यू गाइस देयर इन अदर कोर्सेज एज वेल. टेक केयर ऑल ऑफ यू. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. बाय. ओके, ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. ऑल द